Notices has been issued to the respondent by order dated 4/2022. फिर ये किसके लिए आ रही है? दोनों कनेक्टेड सर, दोनों हाँ, कनेक्टेड। फिर बताइए क्या करना है? In this, the respondent plaintiff filed a suit for declaration of title and injunction, lordship. जी, When the matter came up for hearing, lordship, they filed an application under order 6 rule 17 and under order 14 rule 5, lordship. This application has been allowed by the trial court, lordship. Annexure P3 पेज नंबर 18, lordship, पेज नंबर 18। ये सेकंड केस है सर इसमें 3519 देख रहे सर, दो पिटिशन कनेक्टेड सर, सर दोनों कनेक्टेड। 903 दिखा रहे हैं, नहीं सर, पहले ये 3519 देखो सर, 3519 दोनों कनेक्टेड सर। 3519 पेज 18 पेज नंबर एनेक्जर P3 लॉर्डशिप। जी जी। यह कि उपरोक्त प्रकरण के विचारण दौरान वादी मालसा गौड़ की मृत्यु दिनांक 7/4/2021 को हो गई है। यह कि स्वर्गीय मालसा गौड़ ने अपने जीवन काल में वसीयतनामा दिनांक 11/3/2021 के माध्यम से अपने पूरे होश आवास में अपनी पूर्ण स्वस्थ चित्तावस्था में स्वेच्छापूर्वक गवाहों के समक्ष अपनी पुत्री अमावस्वती पति स्वयंसो तहसील स्वयंसो छिंदवाड़ा के पक्ष में वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में संपादित करते हुए अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था। अतः वादी मालसा गौड़ की मृत्यु हो जाने के उपरांत कारण प्रकरण में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है। प्रस्तावित संशोधन इस प्रकार है। दावे के मुख्य शीर्ष में मालसा पिता मोहन गौड़ स्वयंसो। ठीक है भाई, तो कॉन्सिक्वेंशियल है क्या? कॉन्सिक्वेंशियल है सर इसमें। इसको कैसे आप सर इसमें आपको समझते हो? यादव साहब, यू आर सच अ ठीक है सर, लर्नेड काउंसिल ऑफ दिस कोर्ट। हाँ सर ठीक है। चलिए, ठीक है सर, वो 14/5 भी अलाउ हो जाएगा, 14/5 अलाउ लाएगा ही लाएगा। हो गए सर। ठीक है, ठीक सर, लिखा दे। लिखा दीजिए। श्री भानु यादव लर्नेड भानु प्रताप यादव लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। दो अलग अलग लिखिएगा, पहले लिखिएगा 49.1 पहले लिखा, ठीक है ना? This miscellaneous petition is filed by the defendant being aggrieved of order dated 27/8/2021 passed by learned civil judge class CSA RCS 41A of 2017, whereby an application under order 6 rule 17 CPC is allowed by the trial court. Full stop. It is submitted that this amendment application is arbitrarily allowed and therefore the impugned order be set aside. Next paragraph. Shri Jaideep Sirpurkar submits that amendment is based on a subsequent development, namely death of Malsa Gord, original plaintiff, on 11/3/2021, who according to the legal heir of the plaintiff left a will. डेथ कब हुई है सर? ये डेथ हुई सर, ये 7/4/2021। मैंने गलत दिखा दी, 7/4/2021 सर। 7/4/21 आएगा, वो 11/3 है। 7/4/21 डाइड ऑन इतना and left a will dated 11/3/2021 bequeathing all his property in the name of his daughter Amavaswati, wife of Asadu Gond. Therefore, amendment being consequential to the death of the original plaintiff and based on a document, impugned order allowing amendment being consequential in nature cannot be faulted with. Next paragraph. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that amendment application as has been allowed by the learned trial court is consequential to the death of the original plaintiff and leaving a will in favor, duly executed will in favor of the substituted plaintiff. Therefore, allowing a amendment based on development taking place during the pendency of the suit, having ramifications on the just decision of the suit, cannot be said to be illegal and arbitrary. Therefore, petition fails and is dismissed. सर एक निवेदन है इसमें, ये 14/5 की एप्लीकेशन इसको भी अलाउ की है। इसका लास्ट पैरा था सर, देखना बस, बाकी ठीक है सर। थोड़ा गलत कर जाते हैं कभी कभी, हमसे भी गलती हो जाती है,
लेकिन रीजनिंग कुछ भी रीजनिंग इस- गलत हो सकती है। नहीं ठीक है सर, इसमें सर इसके पहले भी इनको एविडेंस क्लोज हो चुका था, ठीक यानी कि है, पीरियड से सर इसमें हाई कोर्ट ने ये इनको दिया। मुद्दे की बात यह है कि डॉक्यूमेंट हाँ, तो रिकॉर्ड पर आएगा ही ना, ठीक है। यही हुआ है ना, और भी कुछ हुआ? नहीं सर, इसमें ये हुआ कि इनको फ्रेम किया इशू with फ्रेम regard किया। to validity of will. तो वो तो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे जब अमेंडमेंट हो गया तो हो इशू बनेगा ही जी बनेगा। जी जी, बिल रिकॉर्ड पे आएगी। बस इसमें एक चीज कर लीजिए सर, इसमें 3 चांस दे दिए सर एविडेंस के लिए। इसके पहले इनके एविडेंस क्लोज करने के लिए हाई कोर्ट नहीं बोला था, विद कॉस्ट लगाया सर इसमें, यानी कि पीरियड से पेज नंबर 26 नोट बोल देते हैं कि भाई इसको जो है हाँ सर, Expeditiously. एक्सपीडिशन, हाँ इतना कर दें सर। इसको आप विड्रॉ कर लो, फिर इसको नहीं मेरिट में चाहिए। नहीं ठीक है। श्री भानु प्रताप यादव लर्नेड काउंसिल, वही सेम डाल लीजिएगा। दिस miscellaneous petition is filed challenging order dated 12/1/2022 allowing an application under order 5 or order 14 rule 5। नहीं सर, ये 151 में सर, उसमें 114 151 है। They filed an application that I should not be granted opportunity to adduce any further evidence. Court has said that now because an issue has been framed and this lady is Sorry, substituted. rejecting an application under section 151 CPC seeking closure of the right of the plaintiff to lead evidence on the ground that matter is old. Even High Court had directed to impose cost on the plaintiff, but overlooking these aspects, impugned order has been passed rejecting application under section 151 CPC. Next pair, Shri Sirpulkar, Jadip Sirpulkar in his turn submits that since amendment under order 6 rule 17 is allowed, a new issue was framed under order 14 rule 5 CPC. Therefore, trial court rightly rejected application under section 151 CPC because on the new issue it is mandatory to give opportunity to lead evidence to the rival parties. Next para, after hearing learned counsel for the party and taking this fact into consideration that suit is pending since 2017, it is though no interference is required in the impugned order, but in the supervisory jurisdiction, this court directs the trial court to expedite the trial and if possible conclude it within period of 6 months of the date of receipt of the certified copy of the order without affording any undue opportunity to any of the parties. Undue adjournment to any of the parties. Let's see.